Yes, dear students, I believe you will be fine and enjoying good health. Today's lecture number 17, how to create cash sales or create sales receipt in QuickBooks. So आज हम कैश सेल्स और क्रिएट सेल्स रिसिप्ट के मतलब स्टडी करेंगे कि कैसे इस डॉक्यूमेंट को क्विकबुक्स में क्रिएट करते हैं. So this one is a very easy process in QuickBooks. So let's start. So click from here and you click to your concerned customer, and suppose we have just come item computer and only one, so just one. You can create cash sales sales number one. So this one is create through cash sales. Okay, now this one has been create sales receipt. ये sales receipt create हो चुकी है. चेक नंबर कोई दे देते हैं 2 3 और हम इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं. इसको आप देख सकते हैं कि ये आपकी सेल्स क्रिएट हो चुकी है. उसको हम जाके रिपोर्ट्स में देखेंगे, जाके प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड्स में. Now you can see that this has been created. इनकम अब देख सकते हैं कि ये 20,000 अनडिपॉजिटेड फंड जो है वो क्रिएट हो चुकी है. ठीक है, ये सेल्स 20,000 की क्रिएट हो चुकी है और पीछे टोटल 140,000 हो सके. 30,000 एक है, 90,000 एक है, करके ये क्रिएट हो चुकी है. So this one is the process of how to create sales receipt or cash sale from QuickBooks. So this one is a very easy step. I hope that the concept of create sales receipt or cash sales has been cleared regarding to QuickBooks. So like, subscribe and share to other friends so that the information will be reached to the concerned students. Thanks again.